Hello everyone, my name is Purnima and welcome to my channel Glamour by Purnima. So let's learn party makeup today. So CTM में already कर चुकी हूँ. So next we're gonna start with a primer. So primer I'm using this from Smashbox and just apply it on your skin. So just spread it all over. I'm just gonna take some more because makeup is all about building makeup. So little bit more here, just spreading इस तरह से spread करके. Now I'm gonna start with concealing. So for concealing I'm using Warm Beige from Too Faced. So I'm just gonna take this one from here and lightly dab onto my discoloration. Very gently, very little product, because ये जो है ये already बहुत ही ज़्यादा dense product है, तो you don't have to apply too much. So जो भी मैंने थोड़ा सा ब्रश पे लिया उसी को ही मैंने सारा का सारा स्प्रेड कर दिया. Very little, जो कि ब्रश में सिर्फ रह गया है, just very lightly around the eyes. I have not taken any more product, so just like that. इस तरह से little bit around the mouth के लिए मैं और प्रोडक्ट लूँगी. So I'm just gonna take little bit more. इस तरह से on the brush और ऐसे around the mouth. Just put some product. Don't put too much product. और अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर थिक कंसिस्टेंसी लग रही है, तो जस्ट dab it with your hands. एंड ओवर कंसीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर स्टिल आपके कोई मार्क्स जो हैं वो सी थ्रू हो रहे हैं, सो दैट्स ऑल गुड बिकॉज इट्स योर स्किन. सो कंसीलिंग करने के बाद आई एम जस्ट गोना टेक माई हाईलाइटिंग शेड. सो आई एम स्किपिंग फाउंडेशन. So I'm gonna take highlighting shade which is vanilla. So I have taken this brush from Real Techniques. And इस तरह से I'm just gonna do some highlighting onto my face. थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट हम लेंगे. और थोड़ा सा I will take on the forehead. So just dip the wand again and take some product out and just take it from there. It just maintains the hygiene of the product. So हल्का हल्का बिल्कुल lightly आपने डैप करना है. अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लोगे it will look cakey. Little bit on the forehead you have to take. Now I'm gonna take a damp beauty blender और मैं अच्छे से इसको अपने स्किन पे डैप करूँगी. अच्छे से आपने ब्लेंड करना है. Just take some foundation and apply it on your neck as well. I'm just gonna take foundation brush इस तरह से
and put some setting spray इस तरह से, एंड आप मेकअप के बीच में भी सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो, एंड जस्ट डैब अगेन. इससे क्या होगा, आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा, एंड आपके जो एक्सेस होगा वो आपके स्पॉन्ज पे आ जाएगा, बिकॉज वी डोंट वांट एक्सेस, क्योंकि जो एक्सेस होता है वही मेकअप को केकअप करता है. सो वी वांट फ्लॉलेस मेकअप जिसमें कुछ भी मतलब केकीनेस ना हो. सो आफ्टर दिस I'm just gonna apply blush. So blush I am using Benefit Play Tint today. So I will swirl it and put it back of my hand इस तरह से, and अगर मुझे need होगी so I will take more. So इस तरह से I'm just gonna take some blush. And today I'm gonna apply actually hair. So let's apply hair today. तो आज मैं आपको इधर ब्लश अप्लाई करके दिखाती हूँ. Today we are not going on the apples of my cheeks. इस तरह से over here. इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया, so it will give you a very natural finish. आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आपने ब्लश लगा रखा है. So it will give you a very lifted effect as well as a natural finish. इस तरह से. Next I'm gonna go and set my makeup with a loose powder, and I'm gonna take this side of the sponge, take some product, and we'll put it underneath here. Same product, I'm gonna take it here. I'm not gonna apply too much of powder. मैं बहुत ज़्यादा powder नहीं apply करूँगी. We just gonna do little bit of like powder today. So अब इसके बाद मैं करूँगी पाउडर contouring. So I'm just gonna take this thing and make like this. Again for the other side, I'm gonna take more product, tap off the excess like this and push it backwards. मैं साथ ही अपने जो पाउडर है, जो एक्स्ट्रा कुछ लगा हुआ है, वो डस्ट ऑफ भी कर दूंगी, और साथ ही साथ जो है कॉन्टोर को भी मैं ब्लेंड कर दूंगी. इस तरह से. After doing this, I'm gonna apply blush. Blush I'm using MAC today. This one. Gently take it, tap off the excess. Take it, tap off the excess, tap it gently. जो भी ब्रश पे रह जाएगा, that's all you need. I'm gonna do my eyebrows. Eyebrows के लिए I'm using this pencil from ELF, and I'm also gonna use a spoolie to first just brush my eyebrows. Eyebrows को अच्छे से brush करने के बाद I'm just going to use this ELF pencil and just lightly put little bit of product,
ऐसे ही इधर स्लाइटली, नॉट टू मच। प्लीज डोंट मेक योर आईब्रोज टू डार्क, वो अच्छी नहीं लगती। और प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद भी एक बारी जस्ट ब्रश योर आईब्रोज इस तरह से। आफ्टर डूइंग दिस आई एम जस्ट गोना डू माई आई मेकअप। सो थोड़ा सा आई प्राइमर आई विल टेक बैक ऑफ माई हैंड और lightly with the help of a brush I'm gonna take this primer और हल्का हल्का I'm gonna apply it, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेकअप कर चुकी हूँ। अच्छे से जो है ब्लेंड करेंगे फर्स्ट। जस्ट फील फ्री टू यूज योर फिंगर्स जहाँ पे आपको कुछ लगे कि आपको ब्लेंड करना है और आपका ब्लेंड नहीं रीच कर रहा। So after blending this, I'm just gonna apply some loose powder. Dab off the excess and just put it here. I'm just gonna use a lighter shade from this palette. So I'm thinking to use maybe this one, Gratitude. So I put Gratitude here and just start blending. Now on to the next eye, same like this. You can take more जब तक आपको लगे कि it's not the intensity that you want. Using a really good palette. This is from Huda Beauty और इसके fallouts नहीं है। और साथ में जो है टेक्निक भी बहुत मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो है आप कोई भी पैलेट यूज़ करोगे उसके फॉल आउट नहीं होंगे। अगर आप टेक्निक आपकी अच्छी नहीं होगी तो ये फॉल आउट होते ही होते हैं। सो नेक्स्ट आई एम गोना यूज़ ऑरा। So I'm using the same brush, Aura, and I'm lightly dabbing it here. After making an outer corner like this, I'll try to make a V like this. And I'm gonna take my kajal and put it very close to my lash line, like really close. And you have to diffuse it. इस तरह से अप्लाई करने के बाद लाइनर, just take the darker shade here and just diffuse this color because you don't want a harsh line. इस तरह से मैं I'm just mixing Aura and Gratitude and I'm just gonna blend this. And same I'm gonna repeat in the other eye and just diffusing it. So now I am applying kajal इस तरह से। After applying kajal, it's up to you कि आपने शिमर लगाना है कि नहीं, और if you are happy with the matte eyeshadow, so I think I'll apply a little bit of shimmer as well. So for shimmer I'm using this shade. Just take it here and lightly up, you can dab it like in the center like this. Just lightly dab it. हमें बहुत ज़्यादा shimmery eyes नहीं चाहिए. Just take it and lightly dab it. Just in the center, हल्के हल्के हैंड से.
So after this, mascara I'm gonna do later. उसके बाद I'm gonna do my lips. Lips के लिए I'm using Soar. And now I'm gonna use Huda Beauty lipstick on the top. I'm just gonna apply a little bit of this shade अपने brow bone पे इधर. So I'm just gonna apply a little bit of this shade इधर. Like this. Now I'm gonna use little bit of gloss. This is from NARS. This one is from NARS. कहीं कहीं ग्लॉस जो होते हैं वो काफ़ी हैवी लगते हैं ऑन द लिप्स, बट दिस ग्लॉस इज लाइक गुड वन. And now I'm gonna use mascara. So I'm just gonna take little bit. सारा जो भी excess है I'm just gonna put away. और जो भी बस थोड़ा सा mascara है I'm just gonna put it. Lightly. Next is my favorite step, that is highlighting. Highlighting I'm gonna do like this. Tip of your nose, little bit here if you want. And that's it. The final step, I'm just gonna fix my makeup and I'm ready. So thank you everyone for liking and subscribing my channel. Please let me know that और आपको कौन से look सीखने हैं मुझसे, and I'll see you in the next video. Bye.